I'm with Yashwant Deshmukh, founder of C Voter Polling Agency, very well-known psephologist and a familiar face on ThePrint, and Dilip Mandal, a columnist at ThePrint. And today we're talking, of course, about the one controversy that has stirred the nation. Over the weekend, Udaynidhi Stalin, the son of Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin and the grandson of Karunanidhi, a very well-known figure, personality, character in Tamil Nadu politics, set the cat among the pigeons when he called for the end of sanatan dharma, or the eradication of sanatan dharma. And he also likened it to dengue and malaria, diseases like dengue and malaria. And in response to Udaynidhi Stalin's words calling for the eradication of sanatan dharma, there is a huge political storm has broken out into the country. We know all this by now. The BJP led by Home Minister Amit Shah has really gone apoplectic. He said this is an attack on Hinduism and an attack on 80% of India's population, which is Hindu. And on Tuesday, actually in Rampur, at a police station in Rampur in Uttar Pradesh, both Udaynidhi Stalin and Priyank Kharge, who is a minister in the Karnataka government, he's also the son of Mallikarjun Kharge, who's the president of the Congress party, also a Dalit. Now, both Udaynidhi Stalin and Priyank Kharge have been booked. They are for causing hurt and anguish to the sentiments of the Hindu people. They have been booked in a police station in Uttar Pradesh. But to make sense of this whole controversy on Sanatan Dharma, I'd like to welcome you both, Yashwant Deshmukh and Dilip Mandal, to the Print Debates. Thank you so much, Jyoti. Yashwant, can I start with you? You are from UP, born in Banaras, grew up in Lucknow. Why is Uttar Pradesh so angry? Why are North Indian leaders so angry about this remark by Udaynidhi Stalin of Tamil Nadu? Well, they are angry for multiple reasons, Jyoti. First of all, they're angry because largely they have not heard about the Dravidian movement. They don't know, they don't remember what Udaynidhi has said, probably has been said 100 times by the Dravidian leaders and their ideologues all along. So that is a historical fact, you know. I mean, during the anti-North, anti-Brahmin, anti-Hindi movements of sorts, you know, there were processions with people taking Lord Rama's, photograph with the garland of chappals and those kind of things, and hitting them with the chappals. And these used to be the routine and regular scenes during the 60s. Yeah, I mean, those who remember, I wasn't born then, but I was told, I mean, this was nothing new with the Dravidian politics taking shape. I mean, that was the flair of that. Now, does everything remain the same? That is the question. Because of course, 6 years DMK was pretty much a part and alliance partner of the BJP. I remember that during the Vajpayee era, the DMK stock was going down. They were forced to use Vajpayee's poster in their assembly elections. It was the first of all, this was, if I'm not wrong, 2001, if I'm not wrong, probably yes, 2001, 2002. So that politics of Tamil Nadu has actually gone completely in opposite direction for so long. So people in UP are angry, obviously. If you will say something wrong about somebody's identity, somebody's deity, somebody's dharma, somebody's religious identity, obviously people are going to be upset. Yashwant, the fact is, Yashwant, it's not just the people of UP. Amit Shah, who is India's second biggest BJP politician, he himself is leading the charge. He himself is saying कि ये गलत है, कि हिंदुओं पे ये अटैक है. ऐसा तो नहीं है. सनातन धर्म और हिंदुइज्म में बहुत जमीन आसमान का फर्क है. Jyoti, I mean, yes and no. You see, the flexibility of Sanatan or Hindutva as a philosophy, I mean, the Supreme Court has said Hindu, first of all, is not even a religion. It's a philosophy. It's a way of life. That's the way it has survived throughout the ages. That's a different thing. Only thing which troubles me, Jyoti, is the ease at which, these statements are made, particularly towards the Hindu community. I mean, that sometimes bothers me, that do we have leaders who have the guts to say the similar things about other religions?
No, that's not the point, And if Yashwant. not, no, that is the point, Jyoti. I tell you why that is a point. I think if you will, because I'm into public perception, when we are running the polls, when we talk to people, we get this sentiment so often. People are hurt, but when they say that we are hurt, immediately the second point that they say, majority of the people say, दूसरों के बारे में तो ऐसा नहीं बोलते. Right. हमें क्यों? What is hurting people is the contrast that you are free to say, abuse, say wrong things about us, but you don't have the same thing. There is no parity. Like, so you don't have the courage to say this about Muslims or Christians. Christians or for even Jews or anything, in that way. Dilip, what do you think? Aapko kya lagta hai ki what is Yashwant saying? Is he correct in his assessment? No, I agree to him to that extent that the problem lies with the translation. Actually, for the first time, North Indians have heard some Dravid politicians saying this. They have been saying this for so many years, and this was the norm even in Maharashtra politician. If you see the language of Jyotiba Phule, he abused Brahma like anything. Like this, I can't even use the word because that was the public lingo, and he used it, and that book was published by government, so it's still there. And even Ambedkar said Hindus are like rats. They are sick. So this is the language of anti-caste movement. Even Kabir has used so many of these things. So that is fine. I think India is fine with even that language. We have that capacity to agree to disagree and engage in these things in this manner. This is there. So, and even after doing that, Vajpayee aligning with Karunanidhi for running the government for 5 years, so they have seen it all. But I have one contestation with Yashwant on that count, that a person who is within the broader Hindu faith saying something about Hinduism, I think you have to see the nuances, because if you see the language of Protestant idea or Calvinism, they actually wanted to eradicate Catholic faith, and see the language of that time, or even Shia Sunni debate. So from where the attack is coming? Because if you see the Article 25 of Indian Constitution, Hindu faith has a broader geographical connotation. Sikh, Jain, Buddhist, and all different sort of Hindus are part of a broad Hindu fold. So if some criticism comes from within this fold, that has different connotation. When somebody from the outside use these things, that I think we have to understand that nuance. ये अलग है, बाहर से जब कोई अटैक आ रहा है तब उसकी लैंग्वेज, और हिंदुइज्म के अंदर से जब क्रिटिक आ रही है, आप जब सनातन को खत्म करने के बाद पेरियार वगैरह भी कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ कि आप ये जो कास्ट का इशू ये खत्म कीजिए, रिजॉल्व कीजिए, वर्णा का इशू रिजॉल्व कीजिए, आप जो ये औरतों को लेकर उनको प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह को ये कर रहे हैं, ये खत्म कीजिए, उनको आप सब्जुकेट क्यों कर रहे हैं? तो ये सनातन को खत्म कर देना, जैसे वो गरीबी हटाओ, तो गरीब नहीं हटा रहे हैं। नहीं, दिलीप आप क्या कह रहे हैं? दिलीप आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि क्योंकि उदयनिधि स्टालिन हिंदू है, इसीलिए उनका ये जो क्रिटिसिज्म है या क्रिटिक है सनातन धर्म को लेकर, उसमें कोई आपत्ति नहीं किसी को होनी चाहिए। ऐसा भी आप कह रहे हैं? द्रविड़ मूवमेंट ने कभी भी खुद को हिंदू फोल्ड से बाहर नहीं देखा है। पूरे द्रविड़ मूवमेंट ने, वो उसके अंदर की क्रिटिक है। जैसे कि आप आर्य समाज और सनातनी की डिबेट देखिए। अब आर्य समाज ने कहा कि एक मिनट, यशवंत, I'd like to hear what you have to say about this. I mean, Dilip is largely taking this debate in a very right direction. I don't have a problem with that, Jyoti. I am only trying to understand why people are hurt. Your question was aimed to me that why people are hurt. People are hurt and they are rightfully hurt. Okay. Because in Hinduism, we have seen so many reformist movements. And Dilip is absolutely right. When the reforms happen many a time in rebellious nature. लोग रेबल करते हैं और शोषण के खिलाफ, ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और ऑपरेशन और शोषण के खिलाफ जब आवाज उठती है तो कई बार गुस्से की आवाज होती है और राइटफुली होती है, उसमें कोई मेरा बात ही नहीं है। और जो रिफॉर्म्स हुए हैं, उस रिफॉर्म्स में एक हिस्सा भक्ति मूवमेंट का भी रहा है, जिसकी आवाज जो है सॉफ्टर रही है, जो सॉफ्टर तरीके से
लोगों को अंदर से समझा के रही है, एक डंडे की आवाज रही है कि नहीं हम तो उठेंगे और खड़ेंगे और शोषण के खिलाफ आवाज उठाएंगे, गोली भी मारेंगे और डंडा भी मारेंगे। तो दोनों भाषाओं का अंतर है, भाषाओं का कुछ भी अंतर हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द रिफॉर्म्स हैपन एंड रिफॉर्म्स हैव बीन हैपनिंग. No, but is Amit Shah trying to reform? No, why is No, what I'm Shah simply trying to say, Amit Shah is only trying to capture the emotion of the anger. I'm not talking about politicians, you know. मुझे भी लगता है यशवंत सही है, क्योंकि ये जो इश्यू है ना, देखिए तमिलनाडु पॉलिटिक्स में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों द्रविड़ पार्टी मोटे तौर पे ये लैंग्वेज यूज करती रही है. ये जो इसका जो भी इम्पैक्ट होना है वो क्योंकि बेसिकली नॉर्थ और बाकी जगह होना है. यशवंत बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये एक तरह से पॉलिटिशियन क्या बोल रहा है वो इसका अपना it's a 39 plus 1 seat on one side. 39 plus 1 seat from where, Yashwant? Is 39 plus 1 on one side, that is Puducherry and Tamil Nadu, and rest of the 503 seats on the other exactly. side. Okay, so I've tweeted about this. That question is not whether if it will affect the Tamil Nadu, because we in the Mood of the Nation people, if you closely follow, we have actually given 40 out of 40 to the UPA. I mean, basically DMK alliance. 40 out of 40. It's not going. I mean, for them it might suit. What it might not suit is rest of the 500. That's the political side of it. But I'm sure, Jyoti, that this debate is way beyond. I mean, one side is political. We can wrap it up by saying it's a question of 40 versus 504. So what the BJP is trying to do is it is trying to capture the anger of the people in those 503 seats. Is that exactly? Yeah. That's the start and end of it, Jyoti. But because Dilip is here, and you know it's not every day that I would like to take this let me ask one more question. Just one more follow-up question. And Dilip, if you'd like. तो एक तो ये यशवंत कह रहे हैं कि 503 सीटों को लेकर ये पूरा जो है ये सब खड़ा हो रहा है. Not sure about that, Jyoti, because कर्नाटका जो पॉलिटिशियंस हैं, स्पेशली सिद्धारमैया से लेकर वो पूरे वहां पर भी एक्चुअली एक एंटी कास्ट मूवमेंट की लैंग्वेज रही है, और वसवा और लिंगायत फेथ वहां पर बहुत स्ट्रांग रहा है, जो कि बीजेपी के बाद में चला गया. लेकिन मुझे अच्छा जो लग रहा है कि ये जैसे लिंगायत फेथ जब आता है ना तो बहुत बड़ी वायलेंस होती है उसके खिलाफ. अभी एटलीस्ट हम सिविल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम के अंदर बातचीत कर रहे हैं कि अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा है, हमें बुरा लग रहा है, हम केस कर देंगे, इवन केस कर देंगे. ये भी एक्चुअली हम कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेम के अंदर हैं. सो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग. वी आर कंडक्टिंग दिस डिबेट इन अ सिविल मैनर, एंड वी आर whatever we are doing is within a frame. So but my question to you, no, my follow-up question was कि ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, और कमलनाथ जो मध्य प्रदेश में अब जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और ये माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी इस चुनाव में. These two leaders have said कि देखिए तमिलनाडु में जो है सही है, जो गलत है, मतलब जो भी उदयनिधि कह रहे हैं वो अपनी जगह में है, लेकिन लोगों के सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट होने चाहिए. तो क्या ये मैं पूछना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के अंदर आर पीपल सेंटिमेंट्स बीइंग हर्ट? यशवंत, देखिए इसके नंबर्स वाला पार्ट तो हाँ जी दिलीप का ये पहले दिलीप को बोले एक्सपर्टीज है पॉलिटिक्स की. इसका एक जो दूसरा पार्ट है, क्योंकि देखिए ये जो पॉलिटिशियंस जितना अच्छा पॉलिटिक्स को सेंस करता है उतना कोई एनालिस्ट नहीं कर सकता. तो मुझे लगता है ममता बनर्जी और कमलनाथ बिल्कुल सही सेंस कर रहे हैं कि ये डिबेट अगर ज्यादा आगे बढ़ती है देन इट मे हार्म देयर पॉलिटिकल फॉर्च्यून. तो मुझे लगता है कि वो बीइंग अ पॉलिटिशियन वो अपने पोजीशंस ले रहे हैं, और वो शायद उनके हिसाब से अगर ठीक है तो ठीक ही है. लेट्स सी मतलब आगे कैसे इवॉल्व होता है. लेकिन ये डिबेट एक्चुअली मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि 40 और 500 समथिंग है. देश में भी ऐसे इलाके हैं जहां पर ये लैंग्वेज यूज होती रही है. महाराष्ट्र हम लगातार देख रहे हैं, वहां पर नाटक में, गांव में, गाने में से लेकर फिल्मों में. केरला में हो सकता है इसका इम्पैक्ट ना हो, मुझे लगता है ज्यादा इम्पैक्ट इसका आएगा नॉर्थ पर. और इवन आंध्र प्रदेश में भी इसकी बहुत लंबी ट्रेडिशन रही है, ये लैंग्वेज यूज होती रही है और इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है. तमिलनाडु में 70,000 टेम्पल हैं, सबसे ज्यादा रिलीजियस लोग हैं, सबसे ज्यादा हिंदू हैं, और इसके बावजूद वो डीएमके और एडीएमके को जिताते रहे हैं. सो दैट इज तमिलनाडु. वो समथिंग मतलब ये इवन केरल में भी ये चलता रहा है, वो एंकली से लेकर नारायण गुरु, ये लैंग्वेज चलती रही है. सो वहां ये प्रॉब्लम नहीं है. नॉर्थ में आप भी मुझे लगता है कि आप एग्री करेंगे निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट है, और बीजेपी निश्चित रूप से इसको कोशिश करेगी कि इसको जितना वो ले सके यहाँ से वो लेने की कोशिश करेगी. यशवंत, देखिए ज्योति, द थिंग इज
the Dravidian movement was basically rooted on the to eradicate casteism, if I may say so. All right. Now, the funny thing is, while the Maharashtra angle, southern angles have moved way beyond the casteism, the OBCs, the Dalits, the other oppressed classes, as we call them, they have got into power way back. Dravid parties came into powers almost 30 years or 40 years before we had a Mayawati factor in UP. Yes. All right. So that, and if you go back in history, then it's 1920 Justice Party movement. Exactly, just in the 20s. Presidency. Yeah. Thank you, Dilip. Thank you, Dilip. And also, this is why I wanted to take this beyond the current political doldrums. Because Dilip is there, he can actually share a lot many historical facts and figures. And if you look into the Jyotiba movement, Phule movement, and previously otherwise as well. So south of the Vindhyas, these corrective movements, different types of movements have taken place, and the society has moved on. Actually, it was north of India, it is north of India where these changes have come in very late. But ironically, what is happening here? You see, as I said, do the Dravidian parties still need that kind of sentiment to win elections? No. The society has kind of moved on. More so because DMK is already in a pole position. Did they need to say anything of that sort? No. So that is why it baffles me that it was, first of all, for DMK politics, it made sense. For India politics, it did not make any sense. So what Udaynidhi has done, probably in a very, very stupid way, that said something which he thought that I shall prove myself as a DMK leader, son of the soil, whatever. But he did not realize the kind of problem he is going to pose in the new India or a new moved on situation for the rest of them. Because as we see in the north, this is not this issue is not being taken as a problem of the casteism or a remark on the casteism. Because of the use of the word sanatan as an umbrella, even the larger Hindi community who are not that kind of casteist, they are feeling humiliated and hurt. Yes. So what is happening is, if his remarks would have only limited to the casteism part of it, if he would have said casteism is malaria, casteism has to be eradicated from the earth, nobody would have bothered, right? Why? Because the overwhelming majority of the people who are following Sanatana or Hindutva at this point of time, largely I can tell you from the data perspective, overwhelming majorities are not that kind of casteist that the way we used to see it 100 years back or 50 years back or even 25 years back. So that umbrella, attacking that umbrella, all of a sudden everybody is in the naked sun. That's the problem. Yes, everybody is in the naked sun. So why anybody would have a problem with that? Because as Dilip rightfully mentioned, and I started a debate with that the problem is people do not know the history of DMK parties. People do not remember the kind of campaign they used to run in the 40s and 50s and the 60s and so on and so forth. Whether that campaign line was useful and justified in today's date and time, that is something which to be. Second point, which I would like to insert here, because again I'm saying that very, very less you get an opportunity to have a thinker like Dilip over here. I disagree with him on many things and agree with him on many things. It's like that. But to move on, when I see the country to move on, in which direction we are moving, there are things which are to be settled. And I've always said that truth and reconciliation, is where you settle the things in a peaceful manner. Casteism has brought down so much oppression in India. That's the truth. It has to be addressed. Reconciliation is the equality, and that is where everybody tries to go on. Some people feel that the movement is not moving on, so it has to be even more aggressive. Some people might see that, slow and organic changes are happening and let it move in that direction. Right. That is all fine. Okay. The thing is, let the politics aside. The issue is that at this point of time, the North, which still has more casteism, by the way, in day-to-day life, it is taking that debate as Sanatana,
And unfortunately, it is the South, basically, which says that we have moved away from casteism. But the fact is, Jyoti, Tamil Nadu today has 100 times more number of caste-driven parties than Bihar has. Can you believe that? Yeah. Registered political parties doing active politics, even within the DMK alliance. Dilip, what do you think? Yeah, please allow me to make three small points. Yes. Number one, DMK had actually moved far, far ahead of those Dravid Kadgam day, TK days, and Periyar was never part of DMK. So I think that demarcation has to be made. That yes, so that language which actually DK was using was not being used by DMK generally. So that is one thing. And even you have to see the context. This meeting where Udaynidhi uttered those words was a conference organized by CPM, again atheists, and their DK leader Veeramani was also there. So that was the context where he uttered. I don't know whether that was a conscious decision or not, but that was the language and just said this. So this is the context. Number two, I agree that yes, we have moved ahead, and now is the time for truth and reconciliation. We have to accept the truth and then go for reconciliation. I agree. The third point I want to make is that I think there is some psychological problem with Hindus and Sanatanis also, and that is civilizational. Because, for so many years, Hindus have faced only defeat, subjugation, hegemony, and all that. If we see the history, at least 1,000 odd years or 700 or 800. So that they are lacking that confidence. Let there be contestations, let there be attacks, and we are here. We are now a superpower. We are marching ahead with our economy and all that. Dilip, मुझे समझ नहीं आया. Who is lacking the confidence? Yeah, I am talking about Hindus, which is now interchangeably used as Sanatanis, which is not the truth. But this whole civilizational identity is lacking that confidence कि हम आगे हैं. Now एक अच्छा देश है, हम आगे बढ़ रहे हैं. We have such a robust economy, growing at the year-on-year rate of 7 or 8. हमने चंद्रयान भेजा और अंदर के हमारे झगड़े हम रिजॉल्व कर लेंगे. That ये जो एक civilizational confidence होता है, ये I think they are lacking, and that has a historical context. क्योंकि आप अगर लंबे समय से मार खा रहे हैं और आपने लंबे समय से कोई बहुत इन्वेंशंस नहीं किए हैं, साइंस फिलोसफी में कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, पूरा मुगल पीरियड में साइंस में कुछ नहीं हुआ इंडिया में, जिस समय मतलब दुनिया में क्या क्या हो रहा था, मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक रिवोल्यूशन, आपका इतना कुछ जब दुनिया में चल रहा था, उस समय आपके यहाँ पर मतलब मुगल बादशाह क्या कर रहे थे, मतलब एक काम नहीं हुआ है. तो आपका ये जो पीछे का बैकलॉग है, ये आपके कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं से आपको कम कर रहा है. इसलिए इस तरह के इंटरनल इश्यूज को लेकर इतना पर्टर्ब्ड है. मतलब एंजाइटी इसकी इतनी ज्यादा है. इतनी एंजाइटी होने की वजह नहीं है. अब आप इस समय देश की दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं. आपके कॉर्पोरेट दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट्स बनने की तरफ जा रहे हैं. आप इतना सारा मैन पावर दे रहे हैं दुनिया को. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर. ठीक है, अंदर की लड़ाई है, लड़ लेंगे. अब सनातन का अटैक है, ये अपने आप में इतनी नई आइडेंटिटी है. मतलब ये वर्ड ही लास्ट मतलब किसी स्क्रिप्चर्स में देखेंगे तो पता नहीं कहां पर है. और हिंदू फेथ के अंदर इतनी सारी चीजें हैं ऑलरेडी. मतलब कबीरपंथीज हैं, सनातनी हैं, आर्य समाजी हैं, सनातनी भी हैं इसके अंदर. 50 तो इसके अंदर है अपने हैं. और सारे इसलिए हैं क्योंकि दूसरे से एग्री नहीं करते हैं. उससे कुछ प्रॉब्लम है, उससे कुछ शिकायत है, और उसको क्रिटिसाइज करेगा ही ना. द्रविडियन अगर नॉर्थ इंडिया के आर्यंस को क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो द्रविडियन है ही क्यों? तो अलग आइडेंटिटी है, लेकिन वो ब्रॉड फोल्ड के अंदर इस डिबेट को अगर नहीं देख कोई पा रहा है ना, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम. इसको आप उन 5-6 डॉट्स के अंदर देखिए कि इसके अंदर चल रहा है ना अभी. अच्छा, ये मुझे बताइए, ये मुझे I disagree. नहीं, यशवंत जी, आप अपना इसको रखने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि यूपी के अंदर देखिए मायावती भी दलित है, दलित लीडर है, वो क्यों नहीं कुछ कह रही? अगर हम इतना ही नॉर्थ इंडिया के अंदर, जैसे आपने कहा दिलीप की हिंदुओं का एक ये परसेप्शन है या सनातनियों का एक ये परसेप्शन है कि मुगल बादशाह के जमाने में जो 300-400 साल या उसमें कुछ नहीं हुआ,
जबकि पूरी दुनिया में इन्वेंशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज वगैरह हो रही थी। तो आज की तारीख में आई एम जस्ट आस्किंग यू टू I tell you what is happening here. नहीं, इसमें एक्चुअली Jyoti, मायावती इसलिए नहीं बोल रही हैं जिस वजह से अमित शाह बोल रहे हैं। सबको अपने पॉलिटिक्स देखनी है ना कि भाई आप किसके साथ कोalition में जाना चाहते हैं, किस सोशल क्लास के साथ आप कोई see, Mayawati cannot speak simply because the only time, you see, Jyoti, only time Mayawati came to power and became the chief minister was because of the support of the Brahmins. Right. Apart from her core vote bank, you know, if the Brahmins would not have voted for her, she would not have got those many seats. So she knows the limitations of doing the caste-based politics and winnability. So that's one side, you know. And yes, Dilip is right that not just Mayawati, from Mamta to Kamal Nath to every but because anybody outside Tamil Nadu will not risk, for a simple reason that, you see, the politically speaking, what is happening... Mayawati is a Dalit politician. You see, please... अच्छा, इसको बहुत इजी समझाता हूं। देखो, जो हमें मंडल की पॉलिटिक्स वाला जो था ना, मैं उसको उस तरीके से समझाता हूं आपको कि एज ए पॉलिटिकल आइडेंटिटी देयर आर टू लाइन्स ऑफ थॉट्स। वन लाइन ऑफ थॉट इज इंडिविजुअल कैस्टिस्ट आइडेंटिटी, जिसके ऊपर पॉलिटिक्स हो, सोशल रिफॉर्म हो, पॉलिटिक्स हो। अनदर लाइन ऑफ थॉट इज कि एक बड़े अम्ब्रेला के नीचे आइडेंटिटी रिजॉल्व हो और वो एक कंसोलिडेट तरीके से चले। So it's like a micro identity versus macro identity, you know. So that is what I see as in today's, not in the previous, as in today's political context, that is what mandal divisions are right now. Okay. Now, anybody politician who can see that not taking the larger umbrella is going to hit or hurt them politically is not going to toe the line of DMK. Mm-hmm. It's simple. And that marks almost everybody outside Tamil Nadu. I kind of disagree with Dilip here that some elements, yes, in Karnataka, in Maharashtra, but if those elements think that doing the DMK line will make them win politically, electorally, it's not going to happen. So that's a futile exercise. More cultural. Yeah, more cultural, but politically, I believe what Priyank Khadge is saying or doing is going to backfire him big time. That's my my assessment, political assessment. Having said that, I'm coming back to what larger point with Dilip was making. Dilip, your point of civilizational thing is acceptable to me. Yes, I also think on those lines. Only one thing which I probably differ from you. You say it's a lack of confidence. I see it is now new regained confidence. I see this assertiveness that is coming in the larger umbrella is also because of this new progress. And I'm not giving any credit to any political party. I'm just saying that post-independence, our journey in 75 years, as a country, as an India, and the Hindu identity politics added to it probably has given a new assertiveness to that. They are not agreeing to it. While this assertiveness has come, globally speaking, there has been a parallel discussion going on Islamophobia and other things in the last 20-30 years. And in India, we have seen, because of our partition, we have this kind of Hindu-Muslim politics. Not just right now, it has got flared up that big, but anybody who says it wasn't there, I would say that was a dumb fool. It was right from the partition, it was always there. And it's very natural and normal to happen. किसी मुल्क को आप दो हिस्सों में आप कम्युनली बांट दोगे, एक हिस्सा बन जाएगा अपनी मर्जी का और दूसरे को आप बोलोगे सेकुलर, और उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये असंभव है। रिएक्शन तो होगा, उसको कौन कितना पॉलिटिकल फायदा उठाता है वो एक अलग डिबेट का विषय है। एंड दिस इज व्हाट द जर्नी वी हैव टेकन इन 75 years. What I feel here is that in the 75 years of journey and the newfound confidence or reassertiveness of that identity of sorts, call it Hindutva, call it Hinduism, call it Sanatan, whatever. I mean, I'm just talking about the mass psyche here, all right, the way people are putting themselves up. The question is the language which was used during the reformist movement, during that time, have we moved on from that language or not? Number one. I totally agree with Dilip on one thing, कि उस छतरी के नीचे, उस गैम्बिट के अंदर कोई भी क्रिटिसाइज करता है, घर के अंदर बात करो, डिस्कस इट आउट, जिसके मन में जो भी बैठा है बोलो,
truth and reconciliation also needs debate. A lot of debate within the civilian thing where people say it out, अंदर का गुस्सा निकले, चीजें निकले, और it's more of a counseling process. What is happening a problematic here, I tell you, where I started, and you said that leave it, I will bring it sometime later, but no, but it is something where I think people's reaction more right now, or they are hurt more, not because of addressing the casteism issue, because of somehow a bigger number of people feel that one can get away saying anything and everything against their identity, their religious affiliation, and while nobody has a guts to say or dare anything with other religion. I am not going into the religion, but say, for example, I will give you one, and Dilip knows it very well. In India and in our research also, everybody, we do it, conduct surveys every day, and what we found every time, when we ask about religion and the caste, even the Muslims and the Christian tell their caste, even after converting. Right. And that's a very, very touchy issue. Dilip knows it. Why the reservation benefits are not being given to those who are converted to other religion. And that's a debate. That's a different debate. What I'm simply trying to say, has any leader who has worked against casteism spoken a single word why the casteism is still continuing in other religion even after conversion? No. Is it a lesser problem over there? दिलीप बताइए इसका क्या मतलब है? इसको थोड़ा सा इसको मुझे लगता है कि नहीं, वो डिबेट दूसरी है दिलीप। नहीं, देखिए अगर हम डिबेट कर रहे हैं तो इसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं केवल मैप करके ये बता रहा हूँ, आपका पहला ओरिजिनल सवाल आपका पूरी तरह से आपका सवाल वैलिड कंटेस्टेशन, क्यों जब अम्बेडकर हिंदुइज्म के अंदर के कास्टिज्म पर क्रिटिक लिख रहे हैं, हुएर सुद्राज में, एनालिसिस ऑफ कास्ट में, और इतनी सारी और बुक्स वगैरह उनकी आती हुए अनटचेबल्स एंड ऑल दैट, सो वो क्यों हिंदुइज्म के कास्टिज्म के बारे में बात कर रहे हैं और मुस्लिम्स और क्रिश्चियन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं? एक तो ये ऐसे है नहीं, ऐसा उन्होंने मुस्लिम्स के कास्टिज्म वगैरह पर काफी अच्छा खासा लिखा है, उसको हम ज्यादा उसको अपफ्रंट नहीं करते हैं, इसके पीछे हो सकता है कि उसकी वजह हो, तो ऐसा नहीं कि नहीं किया है, लेकिन एक चीज है, क्या उसमें फर्क क्या है? एक बहुत कोर फर्क है। कोर फर्क उन्होंने उसको एनालिसिस ऑफ कास्ट में बहुत अच्छे से डिटेल किया है कि हिंदुइज्म का जो कास्ट है वो उसका रिलीजियस बिलीफ है, वो स्क्रिप्चर्स से आता है, वो मनुस्मृति से आता है, वो वेद से आता है, गीता से आता है। यहाँ से प्रॉब्लम आती है, आ कहाँ से रही है? चतुर्वर्ण पहली बार कहाँ से आ रहा है? कास्ट कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन ब्रह्मा के मुंह से निकलेगा, कौन पैर से निकलेगा? ये फर्क है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जो कास्ट है वो प्रैक्टिस में है, लेकिन उसके स्क्रिप्चर्स से नहीं। तो इसलिए इसको फर्क करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दैट अम्बेडकर आर्ग्यू कि आपको यहाँ पर आपकी लड़ाई जो है, लड़ाई है यशवंत, लेट हिम फिनिश, बट नहीं, बिकॉज़ योर पॉइंट मिस हो जाएगा। दिलीप बोल रहे हैं, दिलीप जो बोल रहे हैं ना, नहीं बीच में आई वांट हिम टू फिनिश। Otherwise, this thing will block because he is explaining this thing right now. I want to understand. कंप्लीट कर लेंगे। Yeah, sure. So जब आप हिंदुइज्म में जब कास्टिज्म से लड़ रहे हैं तो आपके सामने रिलीजन आ रहा है, और आदमी यहाँ पर कास्टिज्म नहीं करता है, वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करता है, कास्टिज्म हो जाता है बिकॉज आपके स्क्रिप्चर्स आपके रिलीजन के अंदर वो इम्बाइब्ड है, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ दैट। इसके लिए उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी, लेकिन ये आपको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का जो कास्टिज्म है वो उनके सोशल बिहेवियर से आ रहा है। तो ये फर्क है। इस वजह से जब आप हिंदू में जब कास्टिज्म बात कर रहे हैं तब आपको सनातन से लड़ना पड़ रहा है, तब आपको ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से लड़ना पड़ रहा है, तब आपको बाकी और जो भगवत पुराण और सबसे आपको लड़ना पड़ रहा है। क्यों लड़ना पड़ रहा है? बिकॉज यहाँ का जो कास्टिज्म स्क्रिप्चर्स में है, इसलिए यहाँ पर हिंदू में कास्टिज्म को लेकर जो भी लड़ाई हुई है वो हमेशा स्क्रिप्चर से लड़ाई होती है सबकी, ये एक की नहीं है, आप पूरे स्पेक्ट्रम को देखेंगे। तो इसलिए अब नहीं, दूसरी बात कंक्लूड कर देता हूँ, 2 मिनट और ले रहा हूँ सर। दूसरी बात, इसके बावजूद यशवंत एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सारी लड़ाइयां होते हुए भी ये एक ब्रॉडर हिंदू फ्रेम के अंदर है, फोल्ड के अंदर है। बाबा साहब भी जब अपना रिलीजन चेंज भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं हिंदू नहीं मरना चाहता हूँ, ये बकवास रिलीजन है सब कुछ, इसके बावजूद वो
बुद्धिस्ट फोल्ड के अंदर जाते हैं और बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन जो लिख रहे हैं, जो मतलब बाकी लोग भी लिख रहे हैं, सब लोग मिलके, उसमें वो बुद्धिस्ट को हिंदू आइडेंटिटी के अंदर रख रहे हैं आर्टिकल 25 में। तो वो इस लड़ाई को अंदर से लड़ रहे हैं। इसको आप ये नहीं कर सकते कि आप ये कर रहे हैं तो आप मुसलमानों की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। भाई मुसलमानों की क्रिटिसिज्म मुसलमानों के अंदर से आएगी ना, क्रिश्चियंस की क्रिटिसिज्म ये ठीक है, ये आप बाहर से जब अटैक करोगे। नहीं, एक आखिरी बात, बाहर से अटैक करते हैं जब भी, तो रिलीजन या कोई भी ग्रुप जो है वो और ज्यादा अपने को बचाने की कोशिश करता है और रेसिस्ट करता है। ये लड़ाइयां हमेशा अंदर से होनी चाहिए। हिंदुइज्म की क्रिटिसिज्म हिंदुइज्म के अंदर से आनी चाहिए। बाकी एकेडमिक कारण से आप किसी को भी स्टडी कर लो, ये बात मैं आपसे 200% एग्री करता हूं। हिंदूज को गाली दे रहे हैं तो इसको हिंदूज एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। इसको भारत सरकार उनका डाक टिकट जारी कर रही है। प्रधानमंत्री फुले के किसी भी जन्मदिन को सुबह को उनको बधाई दिए बगैर अपना दिन नहीं शुरू करते हैं। सावित्रीबाई फुले की माला पहनाते हैं। तो अब फुले एक तरफ ब्रह्मा को गाली दे रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुले को मतलब इस देश के सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर मान रहे हैं। दोनों चीज साथ साथ चल रही है ना जी। तो ये दो चीजें ये हिंदू फोल्ड है। पहली बात तो मैं आपसे 200% एग्री करता हूं इस बात पे कि डिबेट रिफॉर्म ये अंदर से आना चाहिए, बाहर से नहीं आना चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे। हर किसी को अपनी अपनी गलती सुधारनी चाहिए। ये बात मैं आपसे 200% एग्री करता हूं। ब्रह्मा श्रापित हैं, ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं करता हिंदू, वो ये भी एक फैक्ट है। उनका मंदिर इसीलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि वो श्रापित, ठीक है ना, वो इसलिए क्योंकि वो सरस्वती, जो भी मैथोलॉजी है, उन्होंने कुकर्म कोई किया उसके कारण श्रापित हैं, वो आराधित है, नहीं माने जाते। वो एक वैल्यू सिस्टम है कि आप गलत चीज करेंगे तो आप देवता होकर के भी आपको पूजा नहीं जाएगा। दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। प्रॉब्लम यहां पे मैं आपको बताता हूं कहां पे प्रॉब्लम यहां पे है दिलीप, कि स्क्रिप्चर्स की जो आप बात कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम स्क्रिप्चर्स हैं या प्रॉब्लम प्रैक्टिस है, और क्या स्क्रिप्चर्स फॉलो होते हैं? आज की तारीख में कितने हिंदू ऐसे हैं जो मनुस्मृति के उन हिस्सों को बोला जाएगा तो मानने के लिए तैयार होंगे? आप फाड़ दीजिए, मेरे सामने जला दीजिए, मैं अपने हाथ से आग, मैं वो पन्ने फाड़ करके जो आप बोलेंगे जिनमें आपत्ति है मैं खुद आग लगा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और मैं आग लगाऊंगा, मैं आग लगाऊंगा तो कोई मेरा गला काटने नहीं आएगा, कोई मुझे गोली मारने नहीं आएगा, क्योंकि 99.99% लोग कहेंगे जो गलत है काट दो, आगे बढ़ो, हमें दिक्कत नहीं है। एक बात प्लीज इस बात को समझिए कि जो खराब है, जो गलत है, उससे लार्जर हिंदू फोल्ड ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। और स्क्रिप्चर्स की भूमिका हिंदू धर्म के अंदर, सिवाय पूजा के समय मंत्रोच्चार करने जो वो उनको याद नहीं रहते, पंडित जी भी अशुद्ध उच्चारण करते हैं और करके, मैं बनारस का हूं, मैं जानता हूं, मेरे पिताजी जो पुजारी परिवार से आते थे, उन्होंने तो अभी 2015 में देह त्याग किया और उन्होंने अपना देह दान किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज को अपनी बॉडी रिसर्च के लिए दे दी, बोले मेरा संस्कार नहीं होगा, कोई ब्राह्मण नहीं, भोज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपको खिलाना है, जो भूखा है उसको खिलाओ। शास्त्रों में ब्राह्मण भोज का अर्थ यह था कि विद्यार्थियों को सपोर्ट किया जाए। तो उन्होंने जो लिख के गए और हम फॉलो कर रहे हैं। आज हम एम्स के बाहर उनकी पुण्यतिथि होती है, उदय फाउंडेशन के साथ में खाना खिलाते हैं, हम एकल विद्यालय को सपोर्ट करते हैं, एक ट्राइबल स्कूल को हम अडॉप्ट करके हम उसमें कर रहे हैं। तो जो उनका था युगानुकूल सामाजिक पुनर्व्याख्या होनी चाहिए। और ज्यादातर जो समाज है भारत का हिंदू, वो उसमें उस लाइन में आगे बढ़ गया। कुछ ऑफकोर्स अभी भी फंसे हैं, लेकिन स्क्रिप्चर्स कोई फॉलो नहीं करता, कोई पढ़ता नहीं और कोई उसको वैसा वैल्यू भी नहीं देता, इससे ज्यादा कि स्क्रिप्चर्स की हिंदू समाज में भूमिका न के बराबर है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रैक्टिस में जब अनटचेबिलिटी, प्रैक्टिस में जब कैस्टिज्म आता है, दैट इज अ प्रॉब्लम। एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि अदर इंडियंस who have converted to other religions and still carrying the practice of casteism, that is a bigger issue than actually some scriptures saying that. Scriptures तो दुनिया भर के बहुत सारी चीजें कहते हैं। आपने बोला मुझे नहीं पसंद है, मैं फाड़ के मैं आपके सामने हटा दूंगा। आप कहेंगे यशवंत जी मनुस्मृति की ये चीज नहीं पसंद है, दिलीप जी अभी फाड़िए, अभी खत्म कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम भी अच्छे से जानते हैं दिलीप कि दुनिया में दूसरे किसी स्क्रिप्चर्स के ऊपर हम एक लाइन भी नहीं बोल सकते। सो प्रॉब्लम व्हाट वी आर कमिंग टू दैट, पहली बात रिफॉर्म अंदर से आना चाहिए, अपने अम्ब्रेला से आना चाहिए। आई 200% एग्री विद दैट।
truth and reconciliation दिलीप, आप इसका is the जवाब only दीजिए। way क्या forward. यशवंत जो कह रहे हैं कि ये सही कह रहे हैं कि अगर हम कुरान शरीफ या फिर बाइबल के बारे में अगर हम इस तरीके से बोलने लग जाएं कि आप जो हैं अभी भी कास्टिज्म, Christians are still casteist, so they want basically the best of both worlds. You want Right. the share Yes. of Christianity and Islam, but you also want the share of being an upper caste Christian or an upper caste Muslim. नहीं, ये इस पॉइंट पर तो मैं यशवंत के बिल्कुल साथ हूँ कि ये जो स्पेशली क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में अब जो डिमांड आ रही है कि हमने सबसे अच्छा रिलीजन मान के किस रिलीजन में हम कन्वर्ट कर गए, उस रिलीजन में उनके हिसाब से सब कुछ अच्छा है, उस रिलीजन में उनको कास्टिज्म फेस नहीं करनी पड़ती है, लेकिन उनको शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन भी चाहिए। सो दिस इज हिपोक्रेसी। ये तो बिल्कुल ही, मतलब आप फिर करना क्या चाह रहे हैं? फिर आप जो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मेरे ख्याल से वो 91 था, पार्लियामेंट की डिबेट जब चल रही थी कि बुद्धिस्ट जो है, न्यू बुद्धिस्ट, उनको क्या करना है, रिजर्वेशन बेनिफिट देना है नहीं देना है, तो उसमें बहुत एक लंबी स्पीच दी थी प्रमोद महाजन ने मुझे, मैंने उसके पूरे वो पढ़ा उसको, और उसमें वाजपेयी ने क्वेश्चन पूछा कि फिर आप जब कह रहे हैं कि रिलीजन चेंज कर लिया फिर भी आपको रिजर्वेशन चाहिए, तो आपने रिलीजन चेंज ही क्यों किया था? तो ये तो एक बिल्कुल मैं यहाँ पर एग्री कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक चीज फिर भी अभी मुझे लगता है कि देखने की जरूरत है कि क्या स्क्रिप्चर्स हमारे लाइफ को बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर आप कास्टिज्म की क्रिटिक प्रोवाइड करेंगे तो आपको रिलीजन कहीं ना कहीं हिंदूज में तो आएगा ही आएगा, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि दूसरे धर्मों के रिफॉर्म के अपने अपने प्रोसेसेस हैं, ऐसा नहीं है, वरना न्यू टेस्टामेंट लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी थी? और कैथोलिक्स के पूरे प्रैक्टिस जब वो स्वर्ग जाने का टिकट वगैरह बेच रहे थे, उसके खिलाफ प्रोटेस्टेंटिज्म जब आया तो कैथोलिक चर्च कितना वायलेंट था, कितने लोग मारे गए, ब्रूनो को उन्होंने सड़क पर जला दिया, ये बोलने की वजह से कि जो आपका ये आइडिया है कि अर्थ सेंट्रिक पूरी दुनिया है, ये नहीं है, और आपको सोलर सेंट्रिक भी दुनिया हो सकती है, ये बोलने के लिए चर्च ने जलाया था उस आदमी को जिंदा। तो इसलिए ये बहुत वायलेंट प्रोसेस है। इसके मुकाबले मुझे लगता है कि हिंदुइज्म के रिफॉर्म प्रोसेसेस हैं, बिटर हैं, लेकिन ये वायलेंट कम है। एक सिर्फ मुझे लगता है कि लिंगायत रिलीजन वाला जो मामला था, जो बसवन्ना का, उसके अलावा जनरली ये ठीक ठाक रहा है। मुझे लगता है बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी भी जो क्रिटिसिज्म आ रही है, इतनी क्रिटिसिज्म है। ये उदय स्टालिन की माँ अभी भी मंदिर मंदिर घूमती है और दान दे रही है कि नहीं दे रही है? वहां पर सारे टेम्पल्स जितने अच्छे मैनेज्ड हैं, मैंने तो पूरा तमिलनाडु घुमा है और साउथ अच्छे से घुमा है, उतने अच्छे मैनेज्ड टेम्पल शायद भारत में कहीं नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने सनातन को बोल दिया तो इसकी वजह से वहां पर हिंदुइज्म का कोई खतरा हो गया 70 साल में या 60 नहीं, साल में वो तो मूवमेंट कहाँ से में। होगा? देखिए, ऐसा तो है वो नहीं। तो ये वो तो दिलीप एक्चुअली ऐसा है ना ये नॉर्थ कि इंडियन आपने बोला, नी जर्क रिएक्शन है। दिलीप की 1000 ईयर की हमारी जो 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 सिविलाइजेशनल ट्रेजेडी रही, दास्ता रही, वी आई हैव सीन सो मेनी कंट्रीज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। मैं जब लैटिन अमेरिका जाता हूं तो मुझे दिखता है कि पूरा का पूरा मुल्क तो छोड़िए, पूरा कॉन्टिनेंट कन्वर्ट हो गया, और उनके कन्वर्जन का तो सबसे ज्यादा दुख मुझे ये होता है कि वो जो दुख, मतलब तकलीफ की, उनको अपनी भाषाई अस्तित्व भी खो दिया। दे डोंट इवन नाउ हैव देयर ओन लैंग्वेजेस लेफ्ट, तो वो मुझे यार तकलीफ होती है कि बहुत ब्रूटल था, बहुत किसी, वायलेंट था। हाँ, बहुत ब्रूटल, बहुत वायलेंट था। तो मेरा ये मानना है कि वो 1000 ईयर और उस सब के बावजूद भी आज हम सरवाइव कर गए हैं, तो देयर मस्ट बी समथिंग इन अस एज ए सोसाइटी, एज ए रेजिलियंस, एंड दैट समथिंग is actually, when I look back, I feel that something is the capacity to reform, to adapt, to change. That is what made us flexible to, keep pace with the times and go ahead in future. And that's what I believe that every Hindu should be aiming at. Every Hindu or any person, anybody thinking person should be. But I'm talking about myself. I think where Dilip started the point, that's a very valid point. I agree with him that reforms in the North came very late. For n number of reasons. I'm not going into that. For any number of reasons, the reforms came. I think the first genuine reforms came with the Bhakti movement. I mean, at that point of time. Apart from that, in terms of modern reforms, political equity for the bottom of the pyramid, if I may say so, that came much early south of India's and much later in the north of India's. All right. But when it came, it jumped. It jumped altogether into the new spectrum, and we are now dealing with a dual situation within the Hindu fold, that we have to, on one, keep a pace with the newfound money, newfound growth, newfound technology, at the same time, in terms of urbanization and middle class becoming a caste itself.
in that way, or in terms of values and the systems, we are changing. That just a difference between probably Dilip and me and other people who are talking about casteism and things. I don't think anybody would disagree on few things that casteism is bad. Anybody would disagree on things that oppressions were there. Anybody would disagree on things those who were oppressed should be, given the opportunity better to come up with that and everything. Only difference between me, Dilip, and others having a debate on this would be that somebody will say that the change of pace of change is adequate. Some will say more than adequate. Some would say it is less than adequate. Okay. That's the only difference. Okay. I tell you that there is no more difference as far as that. Dilip, please go ahead. Dilip, you have the last word. Let's wrap this up. Right. So, Jyoti, I think that it's good that these debates are happening, number one. And these debates, again, I will underline that debates are generally civil and within the legal constitutional framework, because if somebody is perturbed, he goes to the court or goes to the police station and files a case. That is the best thing that is happening, actually. And Udaynidhi will certainly reply in the courts if the case reaches to that stage. So I think this is good. But still, I would like to underline that don't get perturbed so easily, because we are a great civilization. At least we are moving towards. आप किसको कह रहे हैं ये दिलीप आप किसको कह रहे हैं? ये मैं उनको कह रहा हूँ जो सनातनी इतना शॉर्ट फ्यूज पे बैठे हुए हैं कि एक आदमी ने बोल दिया तो ऐसा कि जैसे कि मार डाला टाइप का ना, इसकी जरूरत नहीं है अब। ठीक है, अभी बोल दिया, ठीक है, आप एक तो समझ में आपको आ नहीं रहा है कि वो लोग उन्होंने क्यों बोल दिया, चलो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आपको इतना डर क्यों लगता है, कि आप 80% हो गए, 80% वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। आप बीजेपी के जो लीडर्स हैं, अमित शाह, उनको मैं उनको कह रहा हूँ कि आप अगर इस समय देश को लीड कर रहे हो तो लीडर की तरह बिहेव करो। आप इसको ठीक है, इस डिबेट चलने दो, बात को होने दो, जो लोग खिलाफ जा रहे हैं कोर्ट में चलने दो, ये भी तो एक एरेना है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आप अगर अदरवाइज इट विल बी ग्रामर ऑफ एनार्की। आप अगर इसको एक आदमी ने कहा कि मार दो तो 10 करोड़ दे देंगे, आप उसको रोको, मतलब ये दिस इज नॉट डन, ये कोई तरीका नहीं है कि उदयनिधि ने बोल दिया तो आप तलवार लेके आ गए कि अब तो हम उसका गला काटने के लिए जा रहे हैं, मतलब दिस इज नॉट डन। आपको उन्होंने कहा सनातन को खत्म कर देंगे, लगभग सनातन के खिलाफ अगर मान लीजिए कि आर्य समाज एक बहुत बड़ा विनर होता तो अल्टीमेटली सनातन को पीछे करके ही तो आगे आता। तो इतनी गुंजाइश छोड़िए, मतलब भारत में इतनी गुंजाइश छोड़िए और इसको मानिएगा कि ये हिंदू फोल्ड के अंदर है। आपको डरना नहीं चाहिए इस वजह से, क्योंकि ये कोई नहीं खत्म कर रहा है हिंदुइज्म को, कोई मतलब डरने की बात ही नहीं है। मतलब बोल क्या रहा है कि सनातन खत्म करो, फिर वो डिफाइन कर रहा है कि सनातन से मेरा ये मतलब है। लेट इट वहां पर सेटल होने दो ना। फिर तो वो तो कह नहीं रहा है कि जेनोसाइड कर रहे हैं, ये अमित मालवीय कह रहे हैं कि 80% का जेनोसाइड होगा। 80% का जेनोसाइड होता है क्या? तब जबकि आपका प्रधानमंत्री, 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यही सनातनी लोग हैं, आपके सारे आर्मी चीफ आपके पास हैं, सीबीआई आपके पास, ईडी आपके पास, सारी एजेंसीज आपके पास, इतना पावरफुल आपका हिंदू सनातनी फोल्ड, और आप कह रहे 80% का जेनोसाइड हो जाएगा। तो शर्म की बात है, मतलब कि आपको इतना भयभीत समाज आप क्यों बनाना चाहते हैं? आप दुनिया की महाशक्ति बनना चाहते हैं, आप अमेरिका और सबके आंख में आंख डाल के बात करना चाहते, दूसरी तरफ करके हम 80% है। एक ही सेंटेंस में कह रहा है, एक सेंटेंस में कह रहा है कि दिस इज थ्रेट ऑफ जेनोसाइड ऑन 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। सेम, मतलब शर्म की बात है कि आपको ये कह रहे हो यार 80% के साथ, मतलब वो कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है मुझे लग रहा है। और ये हिस्टोरिकल रीजन है इसको देखना चाहिए। इतना मतलब लीडरशिप में ये नहीं होना चाहिए, इतना भय नहीं होना चाहिए। ज्योति, अंतर केवल ये है कि दो अलग अलग चीजें हैं, एक पॉलिटिकल रिएक्शन और जो पॉलिटिकली जो जिन लोगों के लिए कह रहे हैं, और वो तो ठीक है, पॉलिटिक्स वो तो पॉलिटिकल तो होगा, मैं उस पर जा रहा हूँ। मुझे कल ये लगता है कि पॉलिटिकल लोग उस सो कॉल्ड डर और उस चीज को, डर को या जो भी कैपिटलाइज करें, वो एक अलग डिबेट है। मेरा केवल ये मानना है कि एक जनरल जो गुस्सा है वो अब न्यू फाउंड असर्टिवनेस है, ये डर नहीं है पब्लिक का। नंबर वी एग्री टू डिसएग्री ऑन दैट। नंबर 2, मुझे ये भी लगता है कि इन द लार्जर स्पेस ऑफ द थिंग्स शायद गुस्सा कंपैरेटिव ज्यादा है। उनको ये बात नहीं है, अगर वो ये बोल देते कास्टिज्म को इरेडिकेट कर दो, या वो ये बात बोल देते
कि सनातन का जो कास्ट वाला हिस्सा है इसको मलेरिया मान करके इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। मुझे लगता है कोई डिसएग्री नहीं करता उस बात से। लेकिन आप बात कर रहे हो कि इंसान को अगर इन्फेक्शन है तो इंसान को इन्फेक्शन में उसको इंसान को जहर दे दो, इंसान ही खत्म हो जाए, तो वो उस तरीके का जब एक भाव आता है तो कोई भी इंसान रिएक्ट करेगा। और इन द लार्जर फ्रेमवर्क आई थिंक एक ये भी कहीं ना कहीं लोगों को दिमाग में आता है कि अगर ये बात किसी और के लिए कही जाती तो इमीडिएटली मीडिया, नैरेटिव, जुडिशरी, हर चीज उसको एक हेट स्पीच के दायरे में ले जा करके अब तक बहुत आगे बढ़ चुका होता। लेकिन चूंकि ये एक हिंदू मानस हिंदू उसके लिए कही गई, इसलिए उसको इतनी सहजता के साथ में, ये सहजता के साथ में ले लेना आलोचना को, इनको पचा लेना, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी रही है ज्योति, और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी कई बार रही है। तो मुझे लगता है कि ये कमजोरी और ताकत, ये डर और असर्टिवनेस के बीच का कोई एक फाइनर प्लेस होगा। अपना जो आदित्ययान गया है अभी सूरज के लिए, उसने एक पॉइंट खोजा है L1, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का एक पॉइंट है जहां पे दोनों का ग्रेविटी एक दूसरे को नलीफाई करती है। मुझे लगता है ये डिबेट्स हम लोगों की जो है ना, ये उस फाइन पॉइंट को ढूंढने के लिए जहां पे हम लोग एक सिविलाइजेशन दायरे के अंदर, अपने फोल्ड के अंदर रिफॉर्म्स के लिए ज्यादा बेहतर डिबेट कर सकें और हेट स्पीच से बच सकें, वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हेट स्पीच जो करेगा उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉलिटिकल वो होंगे, वो एक अलग डिबेट का विषय है। जो लोग उसको समर्थन कर रहे हैं उनको नुकसान होगा, वो भी एक अलग सेमेंटिक्स और मीनिंग का भी इसमें इशू है। आपने क्या बोला, सामने वाले ने क्या समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और अगर सामने वाले ने गलत समझा तो इसमें आपकी भी गलती है, आपकी भी गलती है। बिल्कुल, आप बोल कुछ रहे हो और सामने वाला कुछ और समझ रहा है। आप सनातन बोल रहे हो तो सामने वाला अगर बोल रहा है कि हमारे रिलीजन पर अटैक है, तो बोलने वाले को भी एक्चुअली ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक्चुअली जो बोलना चाह रहा है, जो और वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। I think we'll have to leave it there. But I am absolutely sure that the viewers of The Print will agree with me that this has been an absolutely fascinating and very, very enriching discussion, not just on the Sanatan Dharma controversy, but the politics around it. And while the Prime Minister of Bharat prepares to go to Indonesia and the President of Bharat prepares to host the leaders of the G20, India will discuss and debate all these issues. So thank you so much, Yashwant Deshmukh and Dilip Mandal, for joining me on The Print Debates. Thank you. Thank you, Jyoti. Thank you, Yashwant.